Go ahead, Archana ji. Archana ji, we are live on YouTube. Please go ahead. अतुल भाई, Hello. હર્ષવર્ધનભાઈ તમે પ્રાર્થના કરાવો. કેશવરબેન દેખાતા નથી. હા, હું કરાવીશ. ઓકે, પ્લીઝ સ્ટાર્ટ સર. Should I start? યસ. યસ સર. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ઉત્કલ ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન મુક્તિ અથવા મોક્ષના વક્તા પ્રદીપજી, યમુદાવતીજી, પ્રીતમ કલ્યાણકરજી તેમજ મોડરેટર અર્ચના મુનશીજી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ સેઠ કરાવશે. શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. oh hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. oh hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee. Pray other. No, he is therefore one with every other. Therefore one with every other. Shanti, Shanti. હર્ષવર્ધનભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અર્ચનાબેનને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. અર્ચનાબેન, આપનું સ્વાગત છે. धन्यवाद अतुल जी. तो आज की त्रिवेणी मीटिंग में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो मेन प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, उनको मैं आमंत्रित करूंगी. पहले उनका छोटा सा परिचय. प्रदीप जी, आप MS बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर हैं. आप एक ऑर्गेनिक उत्पादन कंपनी के बिजनेस मैनेजर के रूप में काम करते हैं और आप हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक पेशेवर सलाहकार भी हैं. आप तीसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं. आपका बचपन स्वाभाविक रूप से थियोसॉफी से बहुत ही परिचित था व आप 2002 से एक सक्रिय सदस्य बन गए हैं और कर्नाटक के विभिन्न थियोलॉजिकल लॉजेस में व्याख्यान दे रहे हैं. तो प्रदीप जी, आपको आमंत्रित करती हूँ, आपका प्राध्यान इंग्लिश में करें. थैंक यू. Thank you, Archana ji. Today, the topic that I selected is Liberation or Salvation, written by Dr. BESANT. Why did I select this topic? I always share with you what made me to select a topic. These words, liberation or salvation, which translates in our local languages, both in Hindi and our local language as mukti or moksha. When somebody hears these words, the first thing that comes to their mind is something that we need to know when we are old, after a retirement, when we are done with our family, when we give up our families and go into forest, take up sannyas or something like that. Or some people feel these concepts of mukti and moksha are something not for everyone. Not everyone can understand
can digest, or there are too many philosophies that are aiming towards the same goal, which is mukti or moksha. Here, Madam Besant is trying to simplify as much as possible. And that's the reason why I took up this topic. When I read this, I was also in the same feeling as I said before. Mukti or moksha is not something that a young person like me should read or should know about. These are the concepts for the old people. But when Madam Besant takes this topic, explains step by step, it's so simplified, so straightforward, so practical, that I felt everyone, irrespective of their age, irrespective of what position they are, what they have understood about spirituality, whether they're in the beginning stages of spirituality or they have mastered so many topics in spirituality, whatever it is for everyone to follow. Now, what is liberation or salvation? Liberation means, we all know, free from something, free from bonding. We are liberated. We move away from something that was binding us. And salvation, which is translated as moksha, it's a state of being where there is no more coming back, where it is eternal, moksha, at the state where there is no returning back from that state back to this world where we are. However, these two words are being used alternatively, which gives the same meaning. Either you're free from the bondage, free from the worldly things that are binding you, or you are at a stage which is eternal and there is no more coming back. They use alternatively, and hence Madam Besant don't want to use any one word. She's using both the words as the title, liberation or salvation. In the early Christianity, Madam Besant says, the word salvation had a great meaning. It means someone who possessed the knowledge of God, the knowledge of eternal life. It means someone who reached or who overcome death and achieved that immortal state. It means someone who became the pillar of the temple of the God. These were the words, these were the meaning for salvation in the early Christianity. Even in a Hindu tradition and in Buddhist philosophies, the word liberation means almost same. It was when the human has accomplished something, has overcome this process of evolution, has crossed the threshold of consciousness, and has reached that divine state. These were the meanings, that was the actual meaning of these two words. But down the lane, what happened, both in Christian, Hindu, or Buddhist philosophies, these words were meant in a very easy way. It means they thought salvation means just escaping from hell is salvation. That was a simple meaning given to us. That was down the lane. Even in Hindu and Buddhist philosophies, liberation was meant to be just getting liberated from all these sufferings that we encounter day to day. We are in this world, we are living in this world. So just a mere escape from all our sufferings means liberation. That's what the meaning became later. Madam Besant says that is not so.
Just because there is a change in your surroundings, just because there is a movement from one state to the other state, which you call as swarga or heaven or something, that doesn't guarantee or that doesn't suffice to be called as salvation or liberation. There is something more to that. Why Madam Besant is stressing this? Because of the dilution of the importance of these words is what Madam Besant is focusing here. People think, well, the evolution has happened naturally. The human form was formed naturally throughout the ages. Everything happened naturally, and therefore, if everything is in the plan of God, then naturally every soul has to be liberated or attain the salvation one or the other day without any effort, without any understanding. That's what people think. Because if everything is in the plan, if something has started from one being, universal being, and then slowly the forms came in, the spirit came in, the life began, and each soul is in its journey, learning its lessons, and again to reach that final goal of becoming one with that universal consciousness or whatever you call it, then if at all it is a plan, then it should happen naturally. Then why should we worried about it? Let's enjoy the life that we have, right? That's what, there are certain people who think that. Let's enjoy the life that we have, not worried about what happens next, what I did in the past life or whatever. But how important it is to know the process of attaining salvation or liberation. Madam Besant gives one after the other the reasons. She says, just it's not a change in the circumstances. It's not something that happens naturally. It's not something that you're bound to happen or that you're bound to reach. It is something that needs effort, and it is something that is called inner change. So what is this inner change that she's talking about? She gave an example where a master once said, a prisoner in the dungeon is liberated if he realizes the self, whereas an autocrat or whoever is guarding that prison, he is still in the bondage if his self is blinded. So there is one guy in the prison and one guy who is guarding the prison. The guard who is guarding the prison, he thinks he's free. That's his job. He's not in the prison. But the guy in the prison thinks he's in the prison and he's bound by it, bound by the walls. But she says, even a prisoner, if he is aware of his self, he is a liberated guy. And even this guard who thinks he is free, if he is not aware of the self, he is still bounded. She quotes an example, or she quotes Sri Krishna from Bhagavad Gita, where Krishna says, you may be a peasant, a rich or a poor, or a priest or merchant, an ascetic, or whatever transitory conditions of the earth or earthly you are. He who lives in the self is free. He who knows not the self is bound. This is what Krishna says in Bhagavad Gita. The one who knows the self and who lives in the self, with the self, is free, and those who are not aware of the self is bound. So therefore, what is liberation or salvation means? Liberation or salvation is a state of spirit when he realizes his own nature. In Hindi or in our local language, we have a wonderful word for that. Atma Sakshatkar.
Sakshatkar means realization. You see that exactly in its exact form, Sakshat, in its own form. Atma Sakshatkar. So when you realize that self, and that is a state of liberation or salvation. It is not just a passing phenomenon of the world. As I said before, people do argue with me, like if everything is part of the plan, if all these things has happened without our knowledge, without our effort, right? Starting from one microorganism, amoeba, till this human body, nobody has worked on it, nobody has put an effort. People think like that. And it has all happened as a part of a plan. The forms have emerged. In the same way, the spirit that lies in these bodies is also evolving, and that also evolves to whatever state it has to be one day without the effort. It is not the passing phenomena of the world which happens to be manifesting, but it is a state when one realizes his own nature. And Madam Besant quotes H.P. Blavatsky from Voice of Silence. Let us see these words. He has tasted of pleasure, has bound himself to the objects that yielded it. He has drunk of joy and has clung to the cup that carried it. Ambition has ruled him, passion has swayed him, wealth has changed him, beauty has fascinated him. In myriad shapes he thought to clasp himself, has ever found them but shadows, elusive and unsubstantial. Whatever a pleasure the objects are giving us, the money, the wealth is giving us, the beauty that is making us feel fascinated, all these forms, we think these are the things that we were born for. These are the things that are born, that we have to enjoy until we live here or whatever. But ultimately, they are shadows. They're elusive. They're not fixed. They take you from one form to the other form always. They're unsubstantial. They're not enough for complete life. He has wandered in darkness and groped in vain for a resting place. And then you keep wandering in darkness and then searching for that resting place. At last, the light has arisen. And finally, that light comes out and the shadows vanish. He finds himself is free. So what is that light that comes to make all the shadows to disappear is what Madam Besant will discuss further. So liberation does not imply existence in any particular world, however refined. You may feel that the world around you is so refined, so good, nothing bad is happening, everyone are following the rules, and everything is good. The so-called Ramarajya, what we say, right? There's nothing wrong happening there. So when everyone in that state of Ramarajya, then there is no necessity for mukti. That's what they say, to describe what is Ramarajya. Nobody is asking for moksha. Nobody is asking for liberation from that world. So no matter how refined is the world around you, living under any conditions, liberation is drawing away from all forms of matter, from all states of changing consciousness, and then realization of the self. So liberation is drawing away of the consciousness from all the matter. What is the matter? Matter, the physical world, there is a physical matter. At every world, in the astral world, there is astral matter. In the mental world, there is mental matter that you have created by yourself. Each one of us has created by ourselves. So drawing away from all the matters at every stage is liberation. And that realization of the self, ultimate self, that remains after the consciousness is drawn from all these matters at every level. And that is liberation. For those who are new, for theosophy, what I'm talking about at every level means the physical body is at the physical level, our emotions are at the astral level, the emotional body, our thoughts at the mental level, that's the mind, our intellectual is at buddhi,
that is at the level of buddhi, and then comes Atma. So Atma is covered by all these layers: the intellect, the thought form, the higher thoughts, the lower thoughts, the emotions, the thoughts, emotions, and the physical bodies, or the physical aspects, or the matter. So therefore, all these layers has to be removed. The consciousness has to be taken back from all these layers to realize that self. This is just a small explanation for someone who is new. So what is the way to find to find the self, to realize the self? What is that light that Madam H.P. Blavatsky spoke about in the Voice of Silence? Here, Madam BESANT is giving step by step, one after the other. The first step is to finding of the self. As the Upanishads declare, ceasing from evil ways. So, the first step to find the self, or finding the self, is to ceasing from evil ways, is to stop doing evil things, is to give away evil things, whatever it is. Now, what are these evil things, evil ways? Not only evil things of the physical body that you do with your physical body, the evil things that you do with your emotions, the evil thoughts that you do with your mind, evil things that you do using your intellect, using your knowledge, everything. She quotes Upanishad, which gives a wonderful example. There is but one road to the path. Beware, lest thou should set a foot still soiled upon the ladder's lowest rung. Woe unto him who dare pollute one rung with miry feet. This is a very wonderful translation in her own English during those days from Upanishads. But if anyone translate Upanishad to English, they don't use such, old English, but they will use much simple English. Anyways, the meaning of this is, in Upanishad it is said, you can never climb the ladder or the steps of a temple to reach that final or the God, to see the God, when your feet is soiled, when your feet is dirty. When you have so much of dirt in your feet, you can't step onto those steps. Beware that you are contaminating those steps, rather, if you're trying to climb it. So one has to wash their feet and then climb the ladder or the steps to see the God. So in the same way, the first step to reach salvation, to realize the self, is to wash off all that is evil within you. And again, she quotes H.P. Blavatsky's Voice of Silence. During this process, many a blunder may the seeker yet make, many a time may he falter, slip and fall, but his will must be resolutely set to purity. So during this process of washing away our sins, or washing away the evil things, both actions, thoughts, and emotions, one may slip, one may fail, one may fall down, one may feel it's impossible, but one should develop that strong will for purity. As the compass needle points to the north and shaken from its position ever returns thereto, so must the will of the seeker be ever set to good. As the compass in the compass, as the needle in the compass, it's always pointing to one direction, and no matter how much you shake, it just comes back to that position. That will should act like that needle, where no matter how many disturbances occur, one has to come back to that position of purity. I will finish in 2 minutes now. The source of evil ways will be stopped when the mind dwells ever on the pure. So therefore, it is where your mind dwells. It's where your mind and thoughts reside, and how far they are from the source of the evil. The purified mind body means purified desire body and the purified action body. So once your mind, the thoughts are purified, naturally the emotions, that is the desires, also are purified.
And hence from that, naturally, your actions are also purified. So therefore, the strenuously cleansing himself shall the seeker cease from evil ways. And this cleansing of himself is the way of giving away these evil ways. And next, she says, the next step is to develop viveka. What J. Krishnamurti at the feet of Master said, viveka is the next step. What is viveka? It's discrimination between good and bad, permanent and not so permanent, or eternal, which is eternal and which is something earthly, which is not eternal, non-eternal, or whatever. So one has to develop this viveka to identify what is good, what is bad, what is right, what is wrong, what is evil, what is divine, and what is that permanent, and what is that which is not permanent, which is not eternal. And that divinity or that viveka, once you cultivate, that ultimately leads to vairagya, which is the next step. What is vairagya? Vairagya is detachment from all that is bad, all that is not true, all that is false, all that is not permanent. So once you develop this viveka of discriminating these two aspects, you develop a distaste towards all that is evil, and hence you develop vairagya towards the evil things or the bad things or the not permanent, not eternal things, non-eternal things. And then you learn how to control your mind, which is sama, and then how to bend your thoughts into obedience, how to bend your thoughts, how to make them your slave, how to make the thoughts as your slave, which is dhamma. So therefore, the cleansing of evil, a strong will, viveka, vairagya, sama, and dhamma, these are the steps that she describes for the attainment of salvation or liberation. There are furthermore things that she describes, which I will take up in part 2. Pradeep, as usual, very simplified way of explaining things. Very loudly. Can't hear you. Am I audible now? Yeah, now. Yes. Yes. Thank you, Pradeep ji, for, as always, making it very simple to understand the BESANT style of English and making it simpler for us. तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यमुनावती जी को, जो कन्नड़ा में पार्ट 1 का जो प्रदीप जी ने बताया वो बताएंगी। उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। यमुनावती जी, आप MA और BEd हैं, आप व्यवसाय से शिक्षिका हैं, आप 2011 से TS की सदस्य हैं बेंगलुरु सिटी लॉज में, और आप TS लाइब्रेरी में भी काम कर चुकी हैं। अब आप बेंगलुरु सिटी लॉज में थियोसॉफिकल सूचना केंद्र में काम कर रहे हैं। आप विभिन्न बैठकों में कन्नड़ा में थियोसॉफिकल व्याख्यान देने का आपको बहुत ही अच्छा सा अनुभव है। तो यमुनावती जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ प्रदीप भाई का भाषण कन्नड़ा में पार्ट 1 करिए। स्वागत है। यमुनावती जी। हाँ, धन्यवाद मैडम। आज का विषय सभी ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವುದು ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದು ಎಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಂತ, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಮರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿರದ ಸ್ಥಿತಿ.
ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಮತಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕಂಬವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ನೋವು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದೇ ವಿಮುಕ್ತಿಯೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಲು ಸಹಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರಿತವನೇ ಮುಕ್ತನು, ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರಿಯದವನೇ ಬಂಧಿತನು. ಯಾರು ಬಂಧಿತ ಯಾರು ಮುಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವುದು, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಸ್ಕಿ ಅವರು ಮೌನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಕೇವಲ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾಯೆಯೇ ಜೀವನವೆಂದು ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೆರಳುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಡುಕನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಡುಕನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೊಳಕಾದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಬಹುದು. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕೊಳಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊಳಕು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕೆಡುಕು. ಈ ಕೆಡುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೀವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲಾವಸ್ಕಿ ಅವರು ಮೌನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಡುತ್ತೀವಿ, ಭಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಡುತ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟದು ಕೇವಲ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಆಸೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು, ಆಸೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ನೊಣಗಳು ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೊಳಕಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ,
ಇದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅರಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹಾತ್ಮದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ, ಆಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮವನ್ನೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ದೂರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡನೆಯದು ನಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಜೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಪರಮಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ಸರಿ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು, ಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಯಾವುದು, ಅಶಾಶ್ವತವಾದುದು ಯಾವುದು, ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು, ಅಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿವೇಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗೂ ನಶ್ವರವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಂತರ ದಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆಗಳ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ, ಆಸೆಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾನವನೊಳಗೆ ತನ್ನೊಳಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮೌನವಾಣಿ ಕೇಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಮುಕ್ತಿ, ಮೋಕ್ಷ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Part 1 is over, Rachna. Thank you, Yamnavati ji. Archana ji, unmute. नमस्ते, सॉरी वो अनम्यूट नहीं हो रहा था. थैंक यू आपका जो इतना सहज था और धीरज से बोलने का, कन्नड़ा में थोड़ा हमें भी समझ में आया. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रीतम जी को हिंदी में आज के विषय के लिए भाषांतरित करें. थोड़ा सा छोटा सा परिचय प्रीतम जी का. आप 2024 से थियोसॉफी में जुड़े हुए हैं. आप सत्यम थियोसॉफिक सेंटर गोवा के अध्यक्ष हैं. आपका जीवन का उद्देश्य है ध्यान सीखना. आप ध्यान सिखाते भी हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना है. आप काफी सारी संस्थाओं से संलग्न हैं और आप थर्ड आई प्रोफेसर भी हैं, थर्ड आई मास्टर हैं.
तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आइए और प्रदीप जी का व्याख्यान हिंदी में भाषांतरित करें। आपका स्वागत है। वंदन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे पास जो है वो भाषांतरित है, उसके बेस पर मैं जाऊंगा, खुद का मैं नहीं बोलूंगा। ओके। मुक्ति या मोक्ष, डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा है। थैंक्स टू तरल जी मौका देने के लिए। चलो ठीक है। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में जब अशिक्षित लोगों की भीड़ ने ज्ञानवादी अल्पसंख्यक को कुचला था, जब पुनर्जन्म की शिक्षा के खत्म होने से मनुष्य के अनंत भाग्य को पृथ्वी पर कुछ ही वर्षों के आचरण से जोड़ दिया गया। मेरा दूसरा ये है, मैं हूँ ना, सबको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आ रही। हाँ, इधर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, मैं मोबाइल से बोलूंगा, ठीक है? यस। क्षमा चाहता हूं। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में जब थोड़ा वीडियो का ये हो जाएगा, लाइट गया इधर नहीं सर, आप चलने दीजिए, आपका वो दिख रहा है फोटो, आप चलने दीजिए। ओके। आप मोबाइल ऑन करके चलने दीजिए सर। ओके ओके। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में जब अशिक्षित लोगों की भीड़ ने ज्ञानवादी अल्पसंख्यक को कुचल दिया था। नहीं प्रीतम जी, आपकी आवाज आ रही है, जा रही है। आवाज क्या हुआ? आ रही जा रही है। क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ? हाँ, इधर इलेक्ट्रिसिटी गई है, मोबाइल से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ, मोबाइल से कर लीजिए। ठीक है। हाँ, मोबाइल से कर रहा हूँ। जी जी। एक मिनट। आवाज बहुत क्लियर आ रहा है, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम अगर वीडियो नहीं दिखता है। यस यस सर। जी सर। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में जब अशिक्षित लोगों की भीड़ ने ज्ञानवादी अल्पसंख्यक को कुचल दिया था, जब पुनर्जन्म की शिक्षा के खत्म होने से मनुष्य के अनंत भाग्य को पृथ्वी पर कुछ ही वर्षों के आचरण से जोड़ दिया गया था, उन शुरुआती दिनों में मोक्ष शब्द का एक बड़ा अर्थ था। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति बच गया था उसके पास ईश्वर का ज्ञान था, जो कि शाश्वत जीवन है। इसका मतलब था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और अमरता प्राप्त कर ली थी। इसका मतलब था कि वह ईश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बन गया था, जिसे अब पुनर्जन्म में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार ईसाई की मुक्ति हिंदू और बुद्ध की मुक्ति के समान ही थी। दोनों का तात्पर्य था कि मानव विकास पूरा हो गया था और सचेतन देवत्व की दहलीज पार थी। मनुष्य के स्वयं को महसूस कर लिया था, सचेतन रूप से परम के साथ एक हो गया था। भ्रम की अवधि समाप्त हो गई थी, स्पष्ट दृष्टि प्राप्त हो गई थी। आजकल हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों के लिए इन शानदार शब्दों की समृद्ध सामग्री को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। ईसाई मोक्ष को नरक से मुक्ति और स्वर्ग में प्रवेश के रूप में मानते हैं। हिंदू मुक्ति को पृथ्वी के कष्टों से मुक्ति, पर्यावरण में बदलाव के रूप में मानते हैं, न कि आत्म साक्षात्कार के रूप में। एक बार एक गुरु ने मुक्ति के लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था, मोक्ष परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि परिस्थिति का परिवर्तन है। सच्चाई संक्षेप में है, मुक्ति एक आंतरिक परिवर्तन है, बाहरी परिवर्तन नहीं।
यह बाहरी बंधनों को तोड़ना नहीं है, बल्कि एक प्रकाश है जो हमारी आवश्यक स्वतंत्रता को प्रकट करता है। काल कोठरी में कैदी मुक्त हो जाता है यदि वह स्वयं को जान लेता है। एक निरुंकुश व्यक्ति बंधन में होता है यदि वह स्वयं को अंधत्व में रखता है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं जो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित है कि ऐसा व्यक्ति मेरे अंदर रहता है, चाहे उसका जीवन जीने का तरीका कुछ भी हो, वो राजा हो या किसान, अमीर हो या गरीब, पुजारी हो या व्यापारी, तपस्वी हो या संसारी व्यक्ति, ये सभी क्षणभंगुर परिस्थितियां है। पृथ्वी की सांसारिक यदि वह स्वयं में रहता है तो वह मुक्त है, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह बंधा हुआ है। मुक्त व्यक्ति शाश्वत में स्थापित है, बंधु हुआ समय के गुजरते मलबे के बीच बहता रहता है। मुक्ति आत्मा की वह अवस्था है जब वह अपनी प्रकृति, अपनी शाश्वतता को महसूस करता है, जब वो खुद को वास्तविकता के रूप में जानता है, न कि उस दुनिया की एक क्षणभंगुर घटना के रूप में जिसमें वो प्रकट होता है। लंबे समय से वो पृथ्वी के क्षणभंगुर दृश्यों के साथ खुद की पहचान करता रहा है। उसने पदार्थ के लिए जल में अपना प्रतिबिंब देखा है और उससे मोहित होकर चिल्लाया है, ये मैं हूं। उसने आनंद का स्वाद चखा है और खुद को उन वस्तुओं से बांध लिया है जो उसे प्रदान करती है। उसने आनंद का पान किया है और उस प्याले से चिपका रहा है जो उसे ले जाता है। महत्वाकांक्षा से उस पर शासन किया है, जुनून ने उसे भड़काया है, धन ने उसे जकड़ लिया है, सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया है, असंख्य रूपों में उसने खुद को जकड़ने की सोची है और हमेशा उन्हें छाया के अलावा कुछ नहीं पाया है, मायावी और अवास्तविक। वह अंधेरे में भटकता रहा है और आराम करने के लिए जगह की तलाश में व्यर्थ ही भटकता रहा है। आखिरकार प्रकाश उग गया आया है और जैसी ही छाया गायब हो जाती है वो खुद को मुक्त पाता है। ऐसा HPB द वॉइस ऑफ साइलेंस में लिखा है। मुक्ति का तात्पर्य किसी विशेष दुनिया में अस्तित्व से नहीं है, चाहे वह कितनी भी परिकृषित क्यों न हो। यह समय की किसी भी स्थिति में नहीं जीना है, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों न हो। ये चेतना की किसी भी अवस्था में बाहर की ओर देखना नहीं है, चाहे वह कितनी भी आनंदमय क्यों न हो। ये पदार्थ के सभी रूपों में बदलती चेतना की सभी अवस्थाओं से दूर हटना है और फिर स्वयं को बोध है ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, मसीह ने कहा। उपनिषद के अनुसार आत्मा की खोज का पहला कदम बुरे रास्तों से विरत होना है। जब तक इच्छा शक्ति के पूर्ण प्रयास और दृढ़ निश्चय के साथ बुराई को जानबूझकर दूर नहीं किया जाता, तब तक आत्मा की खोज की शुरुआत नहीं हो सकती। पाप के दलदली रास्तों पर चलने वाले पैर पवित्रता के मार्ग पर नहीं आ सकते। पथ पर जाने का केवल एक ही रास्ता है, सावधान रहो कि कहीं सीढ़ी की सबसे निचली सीढ़ी पर भी तुम्हारा पैर गंदा ना हो जाए। उस व्यक्ति को धिक्कार है जो कीचड़ भरे पैरों से एक सीढ़ी को भी गंदा करने की हिम्मत करता है। साधक अनेक भूल कर सकता है, अनेक बार वह लड़खड़ा सकता है, फिसल सकता है और गिर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति पवित्रता की ओर दृढ़ होनी चाहिए। जैसे कि कंपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है और अपनी स्थिति में हिलने पर हमेशा वही लौट आती है, वैसे ही साधक की इच्छा शक्ति हमेशा भलाई की ओर होनी चाहिए।
यहाँ तक कि बुरा करने वाला भी धर्मी माना जाता है। यदि वह जो कुछ भी दृढ़ निश्चय होकर चाहता है उसके लिए सही ढंग से संकल्प करना है, जो कि वह अनिवार्य रूप से बन जाता है। बुरे मार्ग केवल मांस की शरीर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इच्छाओं और विचारों से भी संबंधित है। विचारों को बुराई से दूर रखना चाहिए और कभी भी अशुद्धता पर सचेत रूप से एक पल के लिए भी रहने नहीं देना चाहिए। बहुत से मन मक्खियों की तरह है जो गुलाब के बजाय कचरे पर बैठना पसंद करते हैं। जब मन हमेशा शुद्ध पर रहता है तो बुरे मार्गों का स्तोत्र बंद हो जाएगा। इसी तरह बुरी इच्छाएं भी समाप्त हो जाएगी। जब बुरे विचारों से उत्पन्न, उत्तेजित और पोषित नहीं होंगे। शुद्ध मन शरीर का अर्थ है शुद्ध इच्छा शरीर और शुद्ध क्रिया शरीर। इस प्रकार स्वयं को कठोर परिश्रम से शुद्ध करके साधक बुरे मार्गों से विरत हो जाएगा। ऐसा एसबीबी ने लिखा है द वॉइस ऑफ द साइलेंस बुक में। ये कदम उठाकर उसे अच्छे कामों में सक्रिय होना चाहिए। जो आत्मा को जानने वाला है उसके लिए कोई नकारात्मक अच्छाई पर्याप्त नहीं है। जैसे बुरा काम अलगाव की भावना को बढ़ाता है और मजबूत करता है, वैसे ही अच्छा काम एकता की भावना को बढ़ाता है और मजबूत करता है। सभी बुरे कामों की जड़ घृणा में है और घृणा तोड़ती है। सभी अच्छे कामों की जड़ प्रेम है और प्रेम जोड़ता है। जब साधक दूसरों की सेवा में लग जाता है, उनका भला चाहता है, उनके हितों पर विचार करता है, अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ता है, तभी उसमें से वह सही विवेक जागृत होना शुरू होगा। तो उनका सही विवेक जागृत होगा। उन लोगों के लिए पहली योग्यता है जो मार्ग पर चलते हैं। जो मार्ग पर चलते हैं वह अपने चारों ओर वास्तविक और अवास्तविक, स्थायी और क्षणभंगुर में अंतर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ऐसा करना सीखता है, उसके भीतर अवास्तविक और क्षणभंगुर के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। जो भोजन उसे अच्छा लगता था वो उसके मुंह में राख हो जाता है। जो वस्तुएं उसने पकड़ी थी वे उसके हाथ में चूर चूर हो जाती है। उसने जिन रूपों को पकड़ा था वे उसके आलिंगन में लुप्त हो गए। इससे उसके अंदर घृणा पैदा होती है जो तुरंत शांत और मुस्कुराते हुए वैराग्य में बदल जाती है। वो अपने मन को अपने नियंत्रण में लेता है और उसे नियंत्रित करना सीखता है। समह मन में वह इच्छा और क्रिया को नियंत्रित करता है और उन्हें अपनी इच्छा के अधीन कर देता है। जैसे जैसे एक आगे बढ़ता है वो अपने द्वारा बनाए गए सन्नाटे में मौन की आवाज की एक हल्की फुसफुसाहट आत्मा की महिमा की एक झलक पाता है। इसके साथ ही जीवन की एक उछाल, आनंद की भावना, शक्ति की भावना और एक पल के लिए वह भगवान बुद्ध के शब्दों की सच्चाई को जानता है। तुम बंधे नहीं हो, चीजों की आत्मा मधुर है, अस्तित्व का हृदय दिव्य विश्राम है। फिर बादल छा जाते हैं, प्रकाश लुप्त हो जाता है और संसार पर अंधकार छा जाता है। फिर भी उसने देखा है। सर एडवर्ड अर्नाल्ड, द लाइट ऑफ एशिया, इसमें ये लिखा है। सबको धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद प्रीतम जी। प्रदीप जी, मैं आई वुड इनवाइट यू फॉर द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर in English. You're welcome. Kindly unmute, please. Okay. In the first part, Madam Besant talks about ceasing of evil, development of strong will for purity, viveka,
discrimination from what is good and bad, what is important and what is not important, and development of detachment to all those that is evil and not so important, that is vairagya, and achievement of control over the mind, that is shama, and free from these worldly pleasures, that is dhamma, or using the thoughts or bending the thoughts as per one's will. And then she says, after this, here onwards, his path is easier. So what is next? It's very easy. All these 6 aspects that she talk about needs practice, effort, strong will. But hereafter it's easier. Let's see whether it's easy or not. Maybe we are failing in these easiest things. Who knows? The seeker now builds into his character the tolerance, which is uparati. Uparati, which means tolerance. Once he practices these, viveka, vairagya, shama, and dhamma, one has to develop tolerance. What is that tolerance? Tolerance towards everything that is different from his self. Simple. As simple as that. Tolerance to everything that is different, everything that is away, everything that is above and below. To tolerate, to accept, and to be. And that is very difficult. Madam Besant says it's easy, but let's see ourselves. Are we tolerant? Are we tolerant? So many things comes up in our mind. Anyways. And then the endurance, titiksha, which beareth all things, will come up. Then the sadhaka will gain that titiksha, that is endurance, that is anything that happens to him, to endure that, to maintain his constant state, no matter what is happening to him. And then a sure faith in his own divinity gives him confidence, that is shraddha. And then the sadhaka gains shraddha, that is faith on his divinity, or faith in what he believes, faith in what he wants, without any distractions, without any doubt. That is shraddha, which will further lead him to all mastering power yields equilibrium, which is samadhana. And the final step is equilibrium, that is samadhana. And one thing remains, that one desire to become one with deity, that is mumukshu. So that is the ultimate state, starting from uparati, tolerance, which leads to endurance, titiksha, and then to confidence or shraddha, which leads to equilibrium, samadhana, state of equilibrium. And then only one thing remains, to become one with the deity, and that state of mumukshu. So these are the things that she thinks it is very easy, and she has not dealt in detail. Well, maybe some other time we have to deal with each one of them in detail, and then we know whether it's easy for us or not. Once a sadhaka reaches at this state, he then gives up many things. Many things have fallen from him, fallen away from him, like the illusion of personality. We all have an illusion of personality. We all believe what we are. I am this, I am that, and this is what I'm going to do, and this is mine, and this is not mine. So that entire illusion of personality is the first thing that falls away. And doubt, superstition, just following something, some tradition, or some activity or some action without knowing the meaning, desires, repulsions, all this falls away from him. Wish for form life and wish for formless life.
she puts in this sentence two beautiful things. When you either wish for a form life, when you wish for these forms to live in this earth with these forms, or you learn something and there is something above this which is formless, and when you're still wishing for that formless, both are desires. So the wanting to leave this earth and reach higher stages is again a desire, which still you have to overcome. Pride, wavering, and ignorance. These are the things that falls apart from him. And then the sadhaka is really free from all that was binding him, free from the delusion. And immediately what he feels is, she says, he was always free. But there was this delusion through which he was, which didn't allow him to see that he was free always. He thought he was not free. He thought everything is binding him. But that delusion, when he comes out of that feeling, only then he realizes that he was always free. But he was not aware of it. Just like a hypnotized patient, once the process of hypnotism is successful and then he's hypnotized, even when you stop all those hypnotizing techniques, he's still in that state until you bring him back or wake him up. And what is that state? One reason for that state of ignorance is ignorance, which is avidya. So she says avidya, ignorance, is the most important thing that has always kept you in that illusion that you are not free. And falling away of that illusion, coming out of that avidya, is nothing but cleaning a lamp, the glass of the lamp, cleaning the lamp glass. You're not merely increasing the intensity of the light, you're just cleaning the glass. Once the glass is cleaned with that smut, then the intensity of the light is obviously or naturally increased. You're not turning the light more on or turning the light on. So there is some effort which needs for removal of this ignorance and to allow that light to shine upon. However, one may feel giving up these worldly priorities, attachments, or attractions. One may also be very successful in giving away his emotions or not leading to his emotions and not allowing his emotions to take him into their control. One may also have learned the subtle way of controlling the mind, using the thoughts to his will. But however, there are still higher worlds, higher lokas, she says, like we know, that is Bhu, Bhuva, Suva, Mahar, Jana, Tapa, all these lokas. And if you cross these physical, astral, and mental states, but still you're stuck in the Mahar and Jana loka, where you remain in the high state of meditation, but still you're bound. You have to go beyond that state of higher meditation. That's what she says. You can't be stuck in any of these lokas. You have to raise above all these. Or if you are a very strong devotee, and then through worship of God, you are stuck in that bliss of tapoloka. Still,
in all these cases, if the self has not been realized, ultimate return to the life of flesh is inevitable in some world of matter. So, unless you raise above all the aspects, all the matters of every world, every stage that is binding this self, the coming back to the life of flesh is inevitable. Coming back to the life of flesh is nothing, means in simple words, the punarjanma is inevitable. So after saying this, Madam BESANT says, after listening to all these things, that is ceasing from evil, strong will, viveka, vairagya, shama, dama, uparati, titiksha, shraddha, samadhana, and mumukshu, one may think these are not for the common man. These are for the well-learned, who is the master of all Vedanta and so on. And these are not something that one can understand through daily life. So it's a very misconception that a common man thinks. So therefore, she says, it's not so. It's not for any one class of people or someone who is born with it. Because the divine or the divinity is essentially a part of each one of us. We can understand or we can practice all these in a simple way in our daily life. It's not something for आप म्यूट हो गए हैं प्रदीप भाई, काइंडली अनम्यूट. Is my voice audible now? Last 2 sentences we missed. Okay. So all these things, the aspects that she talk about, she says, every human being can achieve this by simple ways, through simple acts in the daily life. It's not for some special person who has done some greatest reading or achieved some degrees and in philosophy and so on. She says, when we start to serve, service to another, and once we learn how to deprive ourselves from the enjoyment and give preference to someone else, this is a simple thing that we can start. That is service. It starts from service. And that thrill of joy, which is from self-denial. So once you learn how happy you are by giving up something, by not accepting something, or giving priority for someone else who need it. So that once you understand the thrill of joy from self-denial, then you're one step closer to the self. So that is the first step, she says, which is service, which involves service. Service is nothing but self-denial and priority to someone else, allowing someone else to take it. And once you start enjoying that thrill of joy by self-denial, you're one step near to the self, which everyone can do. It's not something a great philosopher can do. It's every person can do this, and everyone are doing it. And every time we choose a higher pleasure rather than the lower one, then you learned the right discrimination, that is viveka. So once you learn how to choose a higher thought, a higher principle, a higher ideal from the lower thoughts, from the earthly things, from something which doesn't come with yourself from this earth. So once you learn that, you do develop vairagya, which is again very simple. So once you start choosing higher pleasures or higher thoughts, she mean to say, once you learn to undergo difficulty for the sake of the duty. So for the sake of the duty, once you learn how to undergo
pressure or stress or pain or anything, once you learn that endurance, then that is nothing but viveka. You have selected which is permanent, which is forever, which is eternal. Whenever we repress a spam of discontent and cheerfully smile in the face of disappointment, we are acquiring dispassion. So vairagya is also very simple. When something discontent, when something that is troubling you, that is not making you very happy, when you suppress that feeling, when you can still smile at a disappointment, these are the very simple things, right? We can practice it. We do get disappointments every day, but rather than allowing that disappointment to take over, to be expressed, to be manifested from us, if we learn from the small basic steps to smile during disappointment, that is nothing but dispassion, that is nothing but vairagya. When we fix our attention on what we're doing and refuse to be distracted, we are controlling our mind. That is shama. So when you focus on what you're doing, you may be writing, you may be reading something, you may be doing some simple things like cooking, you may be making a garland, you may be doing the charaka, weaving, or anything, any profession. You may be stitching leather to make a slipper, right? Any work that you're doing, if you can focus on that, and if you're not allowing any distraction, anything to distract you, that itself is the control of mind, shama. And when we check an angry word, we are gaining control on our action, dhamma. That when you're so angry at something, when you want to use a word, an angry word, which can hurt someone, and when you reach a stage where you can just swallow that word, control that word, using that word, that itself shows you reached a stage where you can control a thought from becoming an action. Tolerance can be developed as we stop our criticism of others. So once you stop criticizing someone, when you stop always pointing out the negative things in someone, that is the first step for tolerance. Now tell me, are these things very difficult? These are the very simple things. Endurance, as we take cheerfully and gaily the small worries of life. We all have worries. And once we take them cheerfully, once we go through them, that all these things will pass, with the feeling that whatever we are facing at that point of life do pass. And that is endurance. Daily prayer and meditation will bring us touch of the peace and the strength. And not a day passes in which we cannot find opportunities of practicing the grace of serene equilibrium. So what is that serene equilibrium? The state of equilibrium, which she's talking about here, that is samadhana, state of samadhana. Many things can lead you to that state. Just a small prayer, a few minutes of meditation, a few practice, and that leads to that state of serene equilibrium. And where do you practice all these things? You practice all these things not in a special place. It's in every day, in your business office, in the court of justice, in the marketplace, or bedside of a sick, cradle of the joy, wherever you are. Either you're sitting next to a baby in a cradle, or you are sitting next to a person who is sick. Wherever you are, all these things can be followed. All these things can be started in a simple way. And she said, these are so common that we always ignore. She says,
the greatest things are nearest and common in life are full of rarest opportunities. Things which are very common are full of opportunities, and they are so common that we ignore them. A sunset is fairer than Earth's fairest pageant, but is disregarded because it is so common of everyday occurrence. Sunset happens every day. It's so common. That's why we ignore it, right? But in reality, sunset is so beautiful than the greatest pageant of the earth or the greatest or the beautiful place wherever it is. So since it happens every day, we don't see it. So therefore, all these actions which are so common, which can be done at every opportunity given, without ignoring them, if we can cultivate through these simple actions, one can always reach to that state of liberation or salvation, and that road brings us daily nearer to God. It's not like at one go we are shifted towards liberation or salvation. It is a step by step, and every day we come more and more nearer to that divinity what we are seeking. Thank you so much. Thank you, Pradeep bhai. It's always you make it sound very simple and nice with the pauses and the way you explain. Thank you so much, making it simpler for us. May I invite Yamnavati ji, please conclude Kannada में part 2 बोलिए. आपका स्वागत है. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಡುಕನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆ ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ 4 ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪರತಿ, ತಿತಿಕ್ಷೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಉಪರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು. ತಿತಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತನ್ನತನವನ್ನ ಸದಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ತನ್ನತನ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಆನಂದವನ್ನ, ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸದಾ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೇನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸರಣೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ ಸಮಾಧಾನ. ಈ ಇಷ್ಟು ಉಪರತಿ, ತಿತಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಅದೇ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೈವತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣತೆಯ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಸಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಸಿಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು ಸತ್ಯ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧಕನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಯಣವನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಶಾಲೋಕ ಮನೋಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆಳೆತಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮಹಾ ಜನಹ ಹಾಗೂ ತಪಹ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಲು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಹರಿಸಿದ್ರು ಭೂಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರಿಯುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತೆ. ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇದರಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದುದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅನಂತರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹಾಗೂ ನಶ್ವರವಾದುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮತ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರುಗಳು, ದುಃಖ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾನಿಮಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮತನದ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಜೀವನದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೋಕ್ಷನ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮತನವನ್ನ ಅರಿತು ಅದರ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸೋದು ಮುಖ್ಯನ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
धन्यवाद यमुनावती जी, आप जिस तरह से लिरिकली समझाती हैं और इतने स्माइल के साथ समझाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। भाषा न जानने के बाद भी आपका वो भावार्थ निकलता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी प्रीतम भाई को कंक्लूडिंग पार्ट हिंदी में कहें। प्रीतम भाई, आपका स्वागत है। फिर से सभी को मेरा आत्मवंदन। साधक के बारे में अभी बोला जा रहा है कि इससे क्या बदल, उस समय से उसका मार्ग आसान हो जाता है क्योंकि उसने आत्मा की महिमा को देख लिया है और उस प्रकाश में सभी सांसारिक चीजें दूसर और गंदी लगती। वैराग अब एक निश्चित आधार पर स्थिर हो गया है। एक कोई क्षणिक मनोदशा नहीं बल्कि एक दृढ़ विश्वास है। साधक अब अपने चरित्र में सहनशीलता उपरति का निर्माण करता है जो मदद करती है लेकिन मजबूर नहीं करती, और धीरज जो सभी चीजों को सहन करती है। अपने स्वयं के देवत्व में एक निश्चित विश्वास उसे आत्मविश्वास देता है और इस सर्वशक्ति की निश्चितता संतुलन यानी समाधान प्रदान करती है। उसकी एक ही इच्छा देवता मुमुक्षु के साथ एक हो और प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उस द्वार के पार 4 चरण हैं जिनसे होकर दीक्षार्थी मोक्ष की ओर जाता है और वह अपने को बांधने वाले अंतिम 10 बंधनों को तोड़ देता है। व्यक्तित्व का भ्रम, संदेह, अंधविश्वास, इच्छा, विकर्षण, साकार जीवन की कामना, निराकार जीवन की कामना, अभिमान, अस्थिरता, अज्ञान जैसी ही उसकी आंखों से अज्ञान की पट्टी हटती है। वो अपने को तो जान लेता है कि वो कभी मुक्त था, केवल भ्रम ने ही उसे बांधा है। जैसे सम्मोहित रोगी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि उस पर यह विचार डाल दिया गया है कि वह हिल डुल नहीं सकता। वैसे ही हम अपनी पूरी मानवीय तीर्थ यात्रा में बंधन के विचार से सम्मोहित होकर भ्रमित रहते हैं। सम्मोहन भ्रम के हटने के अलावा विषय की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी जो लकवाग्रस्त था वो मुक्त हो जाता है। अविद्या अज्ञान की पट्टी के हट जाने के अलावा मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हम तुरंत प्रकाश को देखते हैं और आत्मा की अंतर्निहित शाश्वत स्वतंत्रता को अनुभव करते हैं। हम हमेशा स्वतंत्र हैं। कोई हमें स्वतंत्रता नहीं दे सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन केवल लंबे अनुभव और प्रयास ही हमसे यह भ्रम दूर कर सकते हैं कि हम बंधे हुए हैं। सारी शुद्धि केवल दीपक के शीशे की सफाई है जो प्रकाश को छिपाती है। शुद्ध दीपक को जलाती नहीं है, ये केवल हमेशा जलती हुई रोशनी को अपनी किरणें भेजने की अनुमति देती है। इसलिए प्रयास मुक्ति नहीं देता, ये केवल बंधन के भ्रम को दूर करता है। कहीं भी किसी भी स्तर पर आत्मा अपनी स्वतंत्रता को जान सकती है और उसका दावा कर सकती है। कदम कुछ भी नहीं है, अवस्थाएं कुछ नहीं है, समय कुछ नहीं है। आत्मा शाश्वतता में रहती है, हमेशा मुक्त रहती है। मुक्ति शब्द अपने पर्याय मोक्ष की तरह आधुनिक धर्मों में अवस्थाओं, स्थानों, स्थितियों के परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। ईसाई स्वर्ग में सुरक्षित खुद को बचा हुआ महसूस करता है। हिंदू इच्छाओं के वध से मुक्ति को प्राप्त करने योग्य समझता है। दोनों आनंद के क्षेत्र में पहुंच सकते हैं और अनगिनत युगों तक उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जो सांसारिक सुखों, सूक्ष्म सुखों, स्वर्गीय सुखों की इच्छा से ऊपर उठ गया है, मर जाता है और उनमें किसी भी देरी करने के लिए इच्छुक नहीं होकर परे के क्षेत्रों से गुजरता है। वह सूक्ष्म के भरपूर जीवन की परवाह नहीं करता, वह स्वर्ग के भोजों को आनंद नहीं लेता, वह अपने सूक्ष्म
और मानसिक शरीर को त्याग देता है, जैसे उसने भौतिक को त्याग दिया था, और उन दुनियाओं से संपर्क को खो देता है जिन्हें उसने त्याग दिया है। इच्छा का कोई बंधन उसे इनमें से किसी से भी नहीं जोड़ता। उनके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है और वे उसे वापस नहीं ला सकते। जीवन का पक्षी बहेलिए के जाल से छूट गया है और तीनों लोकों में से किसी में भी फिर से घोंसला नहीं बनाया। वह अब तक स्वतंत्र है। वह अमूर्त विचार के उच्च स्वर्ग में थियोसॉफिस्ट के अरूप लोक में निवास कर सकता है, और उच्च ध्यान, महान और जनलोक ये युगों तक रह सकता है। फिर भी भविष्य में जो कि गणना से परे है, वो लोग भी समाप्त हो जाएगा और उसके निवासी हो जाएगी, सो जाएगी। वह एक भक्त हो सकता है जो अपने भगवान की पूजा में मग्न होकर आनंद में लीन रहता है, फिर भी उसका लोक भी एक पत्रक के रूप में लपेटा जाएगा और गायब हो जाएगा, मीन्स तपोलोक। इन सभी मामलों में यदि आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो अंततः किसी भौतिक लोक में देह के जीवन में वापस लौटना अपरिहार्य है। एक व्यक्ति की चेतना केवल उस प्रकार के पदार्थ में सक्रिय हो सकती है जिसमें वह कार्य कर सकता है, और जब उस प्रकार का पदार्थ विघटित हो जाता है और केवल सूक्ष्म रूप में ही शेष रह जाते हैं, तो उसे अचेतन में डूबना होगा, जब तक कि कोई अन्य लोक या ब्रह्मांड में उसे अपने कार्य करने के लिए उपयुक्त वाहन प्रदान नहीं करता। जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है, तभी वो वास्तव में आत्म चेतना को प्राप्त करता है। हो सकता है कि इसे पढ़कर कुछ लोग सोचे कि मुक्ति इतनी दूर है कि वे उससे सरोकार नहीं रखते और ऐसे उच्च विचार दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं हो सकते। फिर भी ऐसा नहीं है। इसका सीधा कारण यह है कि हम में प्रत्येक व्यक्ति मूलतः दिव्य है। हम में से प्रत्येक में आत्मा रहती है। जब भी हम बुराई से विमुख होते हैं, हम आत्मा की प्राप्ति की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। हम उस खिड़की को साफ करते हैं जो सूर्य को बाहर जाने से रोकती है। जब हम खुशी खुशी किसी दूसरे की सेवा करते हैं और दूसरे की मदद करने के लिए खुद को आनंद से वंचित करते हैं, तो हम आत्मा की एकता को महसूस करने के एक कदम करीब आ जाते हैं, क्योंकि वह आनंद की उत्तेजना जो आत्मत्याग को पुरस्कृत करती है, वह आत्मा के आनंद की एक किरण है। जब भी हम निम्र के बजाय उच्च सुख चुनते हैं या कर्तव्य के लिए कठिनाई झेलते हैं जहां उपेक्षा से आसान रास्ता खुला है, तो हम सही विवेक का अभ्यास कर रहे हैं। जब भी हम असंतोष की ऐंठन को दबाते हैं और निराशा के सामने खुशी से मुस्कुराते हैं, तो हम वैराग्य प्राप्त कर रहे हैं। जब हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और विचलित होने से इनकार करते हैं, तो हम मन पर नियंत्रण विकसित कर रहे होते हैं। और जब हम क्रोध से भरे किसी शब्द को नियंत्रित करते हैं, तो हम कार्य पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं। दूसरों की आलोचना करना बंद करने से सहनशीलता विकसित होती है, और जब हम जीवन की छोटी छोटी चिंताओं का प्रसन्नतापूर्वक लेते हैं, तो सहनशीलता विकसित होती है। दैनिक प्रार्थना या ध्यान हमें उस शांति और शक्ति का स्पर्श प्रदान करेगा जो आंतरिक ईश्वर के बारे में बताती है। और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें हमें शांत संतुलन की कृपा का अभ्यास करने का अवसर न मिले। ये चीजें हर दिन हमारे चारों ओर होती है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करके गुजर जाते हैं। तुच्छ दौर सामान्य कार्य हमें वह सब प्रदान करेगा जो हमें मांगना चाहिए। खुद को नकारने की जगह हमें प्रतिदिन ईश्वर के करीब लाने का मार्ग। व्यापार कार्यालय में, न्याय की अदालत में, बाजार में और घाट पर, बीमार के बिस्तर के पास, बच्चे के पालने के पास आत्मा को पाया जा सकता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आह मेरे स्वामी, यह जी के उस वफादार सेवक ने कहा, अगर पैगंबर ने आपको कोई महान काम करने के लिए कहा होता तो क्या आप उसे नहीं करते?
आह मेरे पाठक, सबसे बड़ी चीजें सबसे नजदीक होती है, सबसे बड़ी चीजें सबसे नजदीक होती है, और आम जिंदगी सबसे दुर्लभ अवसरों से भरी होती है। जैसे सूर्यास्त पृथ्वी के सबसे सुंदर तमाशे से भी सुंदर होता है, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया जाता है क्योंकि यह बहुत आम है, रोजमर्रा की घटना है। ऐसा ही आत्मा और उसके रास्ते के साथ भी है। तुम ही मार्ग हो अंदर की, और देखो तुम ही बुद्ध हो। शब्द तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। अपनी आंखें खोलो मेरे भाई, और तुम देखोगे। धन्यवाद प्रीतम जी, खूब ही सुंदर भाषांतर करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी तीनों स्पीकरों को, इसके अलावा कुछ आपको और कहना है ये भाषण के सिवा, तो प्रदीप जी, यमुनावती जी और प्रीतम जी, एक एक करके आपको इसके अलावा कुछ और कहना हो तो। प्रदीप जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग मोर देन दिस इन द, आई रिक्वेस्ट ऑल द, या Well, Madam Besant has said everything that is to be told. There is nothing to be added. However, what I want to add in the end is sometimes we feel no matter how much we are spiritual, no matter how much we are learning, sometimes certain things take over us. To be True. simple, anger. She said, if you can control a word of anger, that is the beginning of learning how to develop titiksha, right? But anger, certain emotions do take over us. Then we reach a state where we are in doubt. We think, maybe I'm not spiritual. Maybe I'm just going to a theosophical society or some other spiritual society. I'm just doing a show off. I'm just acting. Maybe I haven't learned anything. Or you're practicing meditation and some guru had told you practice meditation to overcome anger and you will become, so soft and speak polite. Sometimes just because you're learning meditation and you do meditation, you act to be polite. You're acting, you're showing off that you're doing meditation, you are a great spiritual person. And then you're controlling no matter how much anger you're getting, you're trying to control, but basically you're acting. What I want to say is either acting to be spiritual or having a doubt that nothing is working for me. Spirituality is not having any effect on me. Both are wrong. Because Madam Besant says it's every day you have to be nearer to God. It's not like one shot you can jump to the divinity. It's not like one day of graduation. It's not like one day there is a test and you pass it and you will be given the certificate. It's every day. So therefore, there is life ahead. And to learn everything and to become, to reach that state of mumukshatva in only this life. I'm born as this person, I'm using this body, and only this life, and with these bodies, I want to reach that state. That desire is also bad. She says that desire for non-form things is also evil. So therefore, there should be effort, there should be will, but let there not be doubt, and let there not be urgency, and let there not be any acting or any superficial things as a spiritual person. Let's take it naturally, day by day. That's what I want to add. Thank you so much for your concluding thought and a thought-provoking thought. Thank you so much. Yamunavati ji or Preetam ji, and any one of you want to say some other words rather? Yeah. Yes. Yes, ma'am. Yes, Yamuna ji, बोलिए. यमुना जी आप बोल दीजिए. यमुनावती जी बोलिए. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಎಷ್ಟು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು
ಆದ್ರೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮನವರು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಎಷ್ಟು ಆನಂದದ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಜೀವಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ನನ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We got the keywords Krutajnata, Shanti, Magar. Pradeep Bhai, I would request you, whatever she said in Kannada, can you translate for others in English, please? Well, she want to say that these words of mukti and moksha have been treated so secretly or so strongly, have been guarded so strongly and not been given to everyone freely. And the knowledge or the wisdom was guarded only for some section of people or someone who had studied well or who is the master of all. But Madam Besant has simplified it in so easy way for everyone to follow, and by giving us that instrument of service, she has taught us how to go step by step, and we all have to be glad to her. And Yamunavati is saying that she is very happy to be part of this discussion. Thank you so much, Yamunavati ji. We are also very pleased that you are part of this. Ji Pritam ji, आप कुछ कहना चाह रहे थे? You want to say something? Yes, I will speak in English. Is fine, okay now? Yes, please. Yes, they'll not Yeah. Indian. Words you can speak in any language. Yes, I'll say 2 points only, okay? One is spiritually and other is what we call. And first, I would like to thanks to Pradeep ji. So he taken very nicely notes from these books, and I'm very happy, and thanks to Pradeep to done this job. And I would like to say these all are our spiritual scientists. Any Dr. Any Besant or any theosophist or any who are there who are doing all over the world, this work, these are spiritual scientists. So one point is that is responsibility. I would like to say these books are written on that time, so that is for information for us, knowledge for us, but we have to work on this in future, in further, in current life also, in present life we have to work on that, and we also do some scientific work on this and go ahead. Just to only taking information is okay, because now Google is there, they can store many data, but we are human beings, we have the brains, we have the heart, and we have to find out the distance between heart and brain, and we go with our heart. Heart is, what I understood, I'll tell, our heart is more powerful than any other organ in our body. Okay, Thank you so much. this is one point. Yeah. Second point, I will today I seen by 250 lives, past lives. So what I understood from these lives, so there is attachment and detachment. So every soul on this earth, somewhere it is attached, and he don't want to leave that place. Okay, so that is up to each soul to understand where he attach and where to detach. Second point is detach. So where we have to detach, we have to understand. जी हम ये इसी चैप्टर के या इसी के यही विषय के ऊपर रहें तो बहुत बेहतर होगा, और सभी को कुछ ना कुछ कहना है तो वो हाँ तो मैं जी दुबल जी तरल जी आप कहिए। मेयर जी आई हुई है, उनको पहले कर। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर। देयर इज वन जस्ट हियर संतुल की मेंबर है, उनसे मेयर करके उनको बोलिए। ओके ओके, शी वाज देयर। Can you see Archana? No sir, she has put off a video. उसका Okay. Go ahead. Anyone else would you like बिमल जी, हर्षवर्धन जी, शिंदे जी, जो भी किसको कहना चाहें, kindly unmute yourself please and raise your hand. Anyone? जी बिमल जी।
Dubalji, yeah, sorry, I saw Dubalji. Please say. Yeah, always Brother Pradeep is explaining very deep study and in simple way the difficult subjects he is choosing, and it is always a practicable thing. What he is explaining is really impressive, and it's mentioned also in the at the feet of the masters by J. Krishnamurti also. Discrimination and desirelessness, which are the basic things for going toward the liberation, and that is very important. And in our Bhagavad Gita, it is explained that to become a sthit prajna, that is very important, so that we remove that attachment, get detached from these worldly pleasures, and we move forward by our discriminatory capabilities. That is a very nice thing. So all the speakers, they gave proper judgment. I really appreciate them. Thank you. Thank you, Dubalji. Yes, Vimalji, kindly share your thoughts. So I think the last part of the speech, or second part, was too good. The simple things, the daily, day-to-day living. That's how we become. So theosophist is what a theosophist does, is a famous quotation. And yes, this was a very tough topic. And also, I hadn't heard of this book. So that's why I joined the program today. Very interesting, and I think very well done. Very little to say. Basically, everything was said. The talk. So it was very nice talk. Thank you so much. Thank you, Vimalji. Yes, Rajanji, you have Yeah, raised your hand. Sorry, yeah. Rajanji. Vimalji, I'll send you the link. I have your number, so I can send you the link. It's in online. You can share it on the chat box also. All all right, very inquisitive nice. people can you read that? Pradeep bhai, Sure, you can share it in the sure. chat box. Now, Yes, right now. Rajanji, you want to Yeah. say something? Yeah, I wanted to just share that as far as liberation is concerned, since this topic, I've been dwelling on this, the only understanding that I've come to is we are all in the clutches either of the past or the present or the future. We are always dwelling in the past or in the future. And that is where we are caught. And the moment we are in the present moment, we come to the present moment, we are liberated. Liberation is not something that we have to really strive or be difficult. The only difficulty is to be in the present moment. And that's the only thing that we have to always focus on. And every moment we are given an opportunity, for us to be aware, where we are, where is our thought, whether we are in the past thinking, dwelling in the past of yes hua wo waisa hua, this happened, that happened, or we are worrying about the future, kal kaisa hoga. So in my own experience and in my own journey in the last 2 decades, what I've come to understand is liberation is here and now. It's nowhere else. And that's the only thing that I thought I should just share, and so that's all I wanted to say. Thank you. You, Rajanji. Yes, and the thought stayed with me was that if you don't like anything, still you smile and you be in that moment. Pradeep bhai, your examples are so easily understandable. Yes, you were saying something, Pradeep bhai. I completely accept what Rajanji said here. He's basically, when we see JK's teachings, he always stress on this point, right? Be in the present, be in the moment. We are always either in the past or in the future. And yesterday, and like 2 days back in our youth gathering, we had a half an hour discussion for this topic. So it was so lucky that Rajanji brought up this. Now, what is that being in present? What is that being in the moment? Where is present? I just used one sentence and that became a past. The next sentence is the future, right? Present is just a thin line. Now, what it means to be in present now? It means you can be in present when you are with yourself. So no matter beyond the time, beyond the space, you can travel when you are with yourself. When that real self is with you or you are being in yourself, then no matter you don't worry about passing time, right? Because 10 minutes waiting for a train is so big than 1 hour
this lecture, or 20 minutes allotted to me to speak, it was so fast, right? But 10 minutes to wait for a train is so big. So it's relative, the theory of relativity. So now what is past and what is present, or what is future? There is nothing called present actually. It's a very thin line. Just 1 second before is the past and the next fraction of second is the future, right? Now being present is being with yourself. When you are with yourself, then irrespective of the passing time, irrespective of the space, irrespective of the place, then that is being present. That's what was the final outcome of that discussion. I just want to add what Rajan said. Thank you, Pradeep bhai. Yes, Shinde sahab, Shinde ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to say something? Am I audible? Yes, sir. Nothing to add. A very nice discussion is going on. I am really enjoying the silent observation of all this. I must congratulate all these three speakers. Only thing, why we are so much interested in liberation. That is very important point to be discussed. Good thing that at least we think of liberation, which indicates that we are already in the prison and we want to liberate. We want freedom. So artha, kama, dharma, moksha, these are the purushartha. We want to do that purushartha, moksha. And Yamunaji has told very nicely what is the difference between moksha and mukti. Mukti is liberation, moksha is entirely different. What we call in English, liberation and nirvana. Or nirvana is the last one. Nothing wanted, nothing attached, nothing. So the method, even Yamuna said about how Anibagent guided us to have a method of service. It is only service, selfless service, can lead to such kind of state of liberation. So that is also an important point we have to remember. And secondly, the second one we all must learn, letting go. Let it go. You practice this letting go. And there are examples. Buddha left his kingdom. King Ashok left his attitude of war. In the same manner, even Ambedkar left his religion. So many are there. Mahatma Phule left his home. So living is also a kind of method. Live it and see what happens. So this is what we have to practice, what we have discussed. And there are many ways. So human being is to become a not only human being, our journey is from human being to being human. For being human, we have to learn the lesson of this letting go and selfless service. And this higher self, with all capital letter, is always subject, never the object. So to focus ourselves on this higher self, that is what HPV told us, and conceive of unity by expansion in space and infinity. So when you realize your higher self, you are already liberated. That is how it is already discussed. And how by dwelling on oneself or oneness of life or on unity of all life, in due course, we become that unity at higher mental level and then at causal level, which is higher self or Brahma. This is what one reality is. We are reaching. And it is very nicely discussed what Anibagent and Pradeep explained it very nice. I liked Yamunaji's Kannada also. Very nicely she also explained. And Pritam is also tried to convey according to his view. Thank you very much for all the three. Congratulations. And also this is nice discussion total. Thank you. Thank you, Shinde ji. Now, may I request
Anybody else, or may I request Harshvardhan Bhai to say something? Or any? Ji Harshvardhan Bhai? Yes, yes, yes. Is there anyone who wants to say something so that I can sum up at the end? Anyone? No one has raised yet hand is yet. Is there Ji one? Kanchan ji, बोलिए. Kanchan ji is there. आप Yes. kindly unmute, please. मैंने थैंक यू ऑल द थ्री. कन्नड़ा मुझे थोड़ा नहीं समझ आया, लेकिन फिर भी जिस तरह स्पीकर ने बोला वो उससे बहुत कुछ कन्वे हो रहा था उनके कुछ शब्दों से, क्योंकि बेस तो संस्कृत है और वही शब्द थे हिंदी संस्कृत. व्हाट आई अंडरस्टूड इज the entire process in every act and walk of life, you shall your ego. When we react to anything, it is nothing but ego. Any कर्म, any act, anything. क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं हुआ. जिस दिन वो छूट जाएगा और दूसरे का व्यू पॉइंट लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद हम अभी में जी रहे हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं और लिबरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. Basically, it is liberation of self from self. This is what I बहुत ही understand. संक्षिप्त में और बहुत सही कहा आपने. जी हर्षवर्धन भाई. Yes, this is today very nice discussion, and this subject is very interesting. And Pradeep ji, I must congratulate you. Being this from Karnataka Federation, the last month we had a nice experience, and Yamunavati ji, I must congratulate you because you were there in the particular study class, and that we conducted there with the Gujarat Federation, and really it was a nice thing for us and very happy time. So let me remember all those things. Thank Now, you, sir. questions are many in the way. How we live in the presence or in the present moment, that is a different part. How we observe the things. If we go from the past to the future, also we have certain problems. But thinking over this particular thing of salvation and liberation, that is somehow related with the religious ceremony or in that way. But it gives a kind of message. If you consider it from the religious point of view, it changes the whole structure. And if you count it from the point of view of daily life, living in the present, that also creates a kind of understanding. So attachment and detachment, both the things are there, but that is our observation in that way. So in the first part, Pradeep ji, you mentioned that particular thing very nicely, but in the later part also we came to the attributes. How many attributes are there? Sometimes say attributes are for not just to understand our life, but to live with those things. And directly, if we have that understanding, we have practiced a lot, then we can do something very special. And that gives the joy. That is the blessing in disguise. Because we face our weaknesses, we find that we are afraid of certain things to do. And in that way, sometimes we feel a kind of sense of failure. But there is still the struggle that goes on, and it makes a kind of sense. That is a kind of liberation. So in this way, we have to face the whole life. It is the philosophy of life. Whether we live in the way, that is our understanding. My life or my living may not be the same as the others live. That is different because we are all different. But in the way, we have to do something, and there comes the service. That is the last attribute. And service also service before self. That is important. So in that way, if you realize, so that comes to that point, whether we live in present moment or we have the aspirations or we have the ideas or some nostalgic feeling, that we have to understand. So I think that this subject is very interesting and we will continue with that. Again, I must congratulate all the three and Yamunavati ji also especially because I again mentioned, and Pradeep ji, we didn't meet at that time. You were very busy during during that particular time. And also Preetam ji, he is not here. He is now busy with some other program. I must congratulate Preetam ji for Hindi translation. Thank you very much. So
तो सभी का निवेदन हो गया हो तो हम समापन की ओर बढ़े। अतुल भाई। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा सर। जी सरल जी बताएं। जितने भी लोग उपस्थित हैं यही सूचना है कि हमने 20 मई को जो पहला प्रसारण किया था, अगला प्रसारण 15 दिन बाद हम करने वाले हैं। So you're not loud. Okay, now can you hear my voice? Yes. Okay. हमने ये न्यूज का 20 तारीख को टेलीकास्ट किया था और अगला टेलीकास्ट बहुत ही जल्द ये शनिवार या रविवार को होगा। तो जितने भी लोग उपस्थित हैं अपने अपने फेडरेशन के, अपने लॉजेस के न्यूज मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और रिकॉर्ड करके भेज दो, रिकॉर्ड करके अथवा फोटोग्राफ्स के साथ जो लोग हैं उसके ऊपर उनके नाम वगैरह लिखकर, क्योंकि पूरे देश के लोगों के नाम हमें याद नहीं होते हैं, इसलिए अगर चित्र के नीचे नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस अर्चना जी, आप यू कैन गो फॉर द तो आशा हम समापन की ओर बढ़ते हैं। सभी को धन्यवाद। ओम सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone for a lovely enlightening session. See you next Tuesday. Bye. Thank you. Bye.